Hello! In this video, we are going to solve some questions involving other forms of direct proportion. This is question number 1 of exercise 1b. If x is directly proportional to y cube and x is equal to 32 when y is 2, first part is find an equation connecting x and y. X is directly proportional to y cube. It means we can write it in mathematical form as this. X is directly proportional to y cube. And when we replace this alpha with is equal to sign, a constant k is introduced, where k is constant of proportionality. I'm writing it down in the short form. So x is directly proportional to y cube. This means that x is equal to ky cube. Now the value of x is 32 when y is 2. Substitute these values. We replace x with 32 and we replace y with 2 and cube as it is. 32 is equal to k times 2 cube. 2 cube means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. This number is multiplied with itself 3 times. So 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is 8. Now we need to find the value of k. With k, 8 is being multiplied. When it goes to the other side, it will be divided. 8 ones are 8, 8 fours are 32. So 4 is equal to k. The value of k is 4. So substitute this value in the equation. X is equal to k is 4 y cube. So this is the equation which is connecting x and y. This is an equation which gives the relationship between x and y. Now second part is find the value of x when y is 6. We take the equation that we had just formed, x is equal to 4y cube. We need to work out the value of x, so it remains as it is. 4 times the value of y is 6 and x is equal to 4 times. First of all, we need to find the cube because according to both maths, after brackets, we solve the order. Order means power. So 6 cube is to be solved first. Then we will multiply this number with 4. So 6 cube means 6 multiplied by 6 multiplied by 6, which is 216. And when we multiply 216 with 4, we get 864. So x is equal to 864 when y is 6. Third part is calculate the value of y when x is 108. So the equation that we had formed was x is equal to 4y cube. Now here instead of x, we are going to put its value which is 108. And 4y cube remains as it is. With y cube, 4 is being multiplied. When we take it to the other side, it will be divided. And what is 108 divided by 4? It's 27. We need to find the value of y. Here we have y cube. So to cancel out this cube, what we do is we take the cube root on both sides. Cube and cube root cancel out each other. So this cube and cube root will cancel out. And cube root of 27 is 3. So y is 3 when x is 108. Now coming to the last part, part number 4, draw the graph of x against y cube. The equation that we had was x is equal to 4y cube. Now here I would like to give you the concept of dependent
an independent variable. You already know that x and y are variables. Now let's see what are dependent and independent variables. If we look at this equation, the value of x is depending upon the value of y. And whatever we take the value of y, corresponding to that value of y, we will get the value of x. So here in this case, x is dependent upon y. So x is the dependent variable and y is the independent variable. So x is dependent and y is independent. We need to draw the table. We are going to give the values of y ourselves. It's our choice, whatever we want to give the values of y, whatever we want to take the values of y, then we need to cube them. And then how can we get x? When we multiply 4 with y cube. So x is 4 times y cube. तो y की वैल्यूज हम खुद से चूज करेंगे. इट्स आवर चॉइस कि हमने क्या देना है. सो जिस पे हमारी चॉइस है वो इंडिपेंडेंट है और जो हमारी चॉइस से x के आंसर्स आएंगे दे आर डिपेंडेंट. ओके, सो y के लिए आई एम टेकिंग 0 1 2. Now y cube, I have to take the cube of these numbers. 0 cube is 0, 1 cube is 1, 2 cube is 8. Now that I have got y cube, when I multiply it with 4, I will get x. So इसको हमने 4 से multiply करना है. 0 into 4, 0. 1 into 4, 4. 8 into 4, 32. So now we come to the graph. ग्राफ बनाते हुए हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पे आता है. Since we see none of the value is negative, so let's draw the axis accordingly. Okay, since हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो हमने अपने एक्सिस को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है. दिस इज x एक्सिस and this is y axis. अब जो क्वांटिटी हमने x एक्सिस पे प्लॉट करनी है दैट इज y क्यूब. हमें ग्राफ y क्यूब का बनाना है. अब y क्यूब में हमारे पास वैल्यूज हैं 0 1 और 8. तो हमें यहाँ पे हम कितना कैसे स्केलिंग करें. हम लोगों ने इंचेस का ग्राफ पेपर लिया है जिसमें से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1 इंचेस और इनके दरमियान 10 लाइन्स हैं. अब जब हमने 8 तक जाना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, यानी कि 1 लार्ज बॉक्स या 1 इंच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो यहाँ पे वी विल हैव 4, then 6, 8 and 10. और यहाँ हम लेबल करेंगे कि x एक्सिस पे जो क्वांटिटीज हैं दोज आर y क्यूब. अब y एक्सिस पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लॉट करना है. डिपेंडेंट वेरिएबल्स में है 0 4 और 32 तक. यहाँ पे हमने x वाली क्वांटिटीज को लिखना है और 32 तक जाना है. सो हम लोग इधर क्या ले लें. आवर चॉइस हम ले लेते हैं 10. Then we will have 20, 30 and 40. ये स्केल हमारा ही चॉइस है, हम जैसे मर्जी लें so that ये सारे वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास ग्राफ में शो हो जाएं. अब जो ग्राफ हमने बनाना है, जो पहला पॉइंट है दैट इज 0, 0. y क्यूब हमने x पे लिया है तो और x जो है हमने y एक्सिस पे लिया है तो 0, 0.
0,0 किधर होगा? ओरिजिन पे, इसको हम मार्क कर लेंगे. देन वी हैव 1,4. जब 1 है x पे, x एक्सिस पे जब 1 है, 1 का मतलब है 0 के बाद हमने 2 लिया है, तो 1 किधर होगा? 10 लाइन्स के बाद 2 है, तो 5 लाइन्स पे होगा एग्जैक्टली एंड द सेंटर होगा 1. तो जब 1 है तो y एक्सिस पे हमने जाना है 4 तक. 4 का मतलब है 1 2 3 4 हियर. तो ये पॉइंट होगा 1,4. नेक्स्ट पॉइंट है 8,32. जब x एक्सिस पे 8 है तो y एक्सिस पे 32 है. x एक्सिस पे 8, y पे 32 का मतलब है 30 के बाद की 31 है एंड दिस इज 32. So we have 8,32. Now we are going to join these 3 points with a straight line. So as you can see, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो गए हैं. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ एक हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. अब चेकलिस्ट हम देख लेते हैं. ग्राफ पे जो चीजें होनी चाहिए उसके लिए एक चेकलिस्ट है, CSD जेल. C मीन्स कोऑर्डिनेट्स. क्या हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं? यस, हमने लिखे हैं. सो दिस इज टिक. देन स्केल. क्या हमने स्केल लिखा है? नो. सो वी नीड टू राइट इट डाउन एनीवेयर जहां पे भी स्पेस हो. ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने 1 इंच को लिया है 2 यूनिट्स. 1 इंच की जगह आप 1 लार्ज बॉक्स भी लिख सकते हैं या 10 स्मॉल बॉक्सेस भी लिख सकते हैं. इसी तरह ऑन y एक्सिस पे 1 इंच पे हमने लिए हैं 10 यूनिट्स. स्केल इस तरह से लिखना होता है कि ये हमारी लाइन को डिस्टर्ब ना कर रहा हो, लाइन के बीच में ना आ रहा हो. एंड आई लाइक टू पुट इट इन अ बॉक्स. और डेफिनेटली ये लाइंस पेंसिल एंड स्केल से लग रही होंगी, लेकिन मेरे पास अभी स्केल इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है. तो स्केल लिख लिया. डॉटेड लाइंस. डॉटेड लाइंस हम लगाते होते हैं जहां हमारे पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वहां से एक्स एक्सिस पे, ताकि जो रीडर है वो आराम से हमारा काम चेक कर ले और हमें भी अगर कोई मिस्टेक है तो वो पता चल जाए. समथिंग लाइक दिस. और इसी तरह यहाँ पे भी. और 0 0 से तो नहीं बनेगी. फिर जे जॉइंट लाइन. ये जो कोऑर्डिनेट्स थे इनको ज्वाइन भी करना है, हमने किया है. ई मीन्स इक्वेशन ऑन लाइन. इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखनी होती है कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है. तो हमारी ये इक्वेशन थी x is equal to 4y cube. So we have written equation on line as well. L means labeled axis. हमारा axis label होना चाहिए. ये x axis है, this is y. इधर हम नेगेटिव x कर लेते हैं और इधर वैल्यूज y की नेगेटिव हैं. तो हमने अपना एक्सेस भी लेबल कर लिया है. तो सारे कंपोनेंट्स ग्राफ के completed. So with this we have completed our graph. Happy learning!